Good morning, students. In today's video, we will discuss our next topic, that is discharge of parties from liabilities. In Negotiable Instrument Act 1881, the term discharge in relation to negotiable instrument is used in two ways. First, discharge of the instrument, and second, discharge of one or more of the parties from liability thereon. We will discuss these one by one. The very first one we are taking as discharge of a party or parties. इसमें the maker, acceptor or endorser of a negotiable instrument may be discharged from liability in the following ways. There are certain ways in which the parties may be discharged of their liability. Very first one is discharge by cancellation under section 82 subsection A. When the holder of a negotiable instrument or his agent deliberately cancels the name of any party on the instrument with an intention to discharge him, इस केस में जो पार्टी है वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाती है. नेसेसिटी कंडीशन ये है जो कैंसिलेशन है वो इंटेंशनल होना चाहिए और अपेरेंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. यदि ऐसा लगता है कि कैंसिलेशन बाय मिस्टेक हुआ है या विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी हुआ है, उस केस में ये इनऑपरेटिव होगा. नेक्स्ट मेथड इज डिस्चार्ज बाय रिलीज. जब होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट releases any party to the instrument by any method other than cancellation, the party is released from discharging his liability. This is covered under section 82 subsection B. Next is discharge by payment. Of course, parties discharge हो जाती हैं अपनी liability से जैसे ही उसकी payment हो जाती है. This is covered under section 82 subsection C. Next, discharge by allowing drawing more than 48 hours. जब होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज अलाउ करता है ड्रॉई को मोर देन 48 आवर्स एक्सक्लूसिव ऑफ पब्लिक हॉलीडेज, जिससे कि वो बिल को एक्सेप्ट करे, द सेम ऑल प्रीवियस पार्टीज कंसेंटिंग टू सच अलाउंस आर देयरफॉर discharged from liability to such holder, but parties consent to such allowance will not be discharged. यानी कि जिन पार्टीज ने कंसेंट दिया है वो डिस्चार्ज नहीं होंगी, जिनकी कंसेंट के बिना ये हो रहा है वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाती हैं. दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 83. नेक्स्ट इज डिस्चार्ज बाय डिले इन प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक. It is covered under section 84 subsection 1, where a check is not presented for payment within a reasonable time of its issue और ड्रॉर को इसकी वजह से डैमेज होता है बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ द बैंक, देन ही इज डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ सच डैमेज. नेक्स्ट 6, चेक पेएबल टू ऑर्डर. दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 85. A banker who pays in due course a check drawn upon him is discharged from liability, though the endorsement of the payee may be forced. तो बैंक डिस्चार्ज हो जाता है अपनी लाइबिलिटी से. 7th is draft drawn by one branch on another, section 85 subsection A, where a demand draft is drawn by one office of the bank upon another office of the same bank for a sum of money payable to order, the banker is discharged from liability if it makes the payment in due course. फिर इस केस में एंडोर्समेंट चाहे फॉल्टी है. नेक्स्ट 8th, discharge by taking qualified acceptance. This is covered under section 86. If holder of a bill takes a qualified acceptance, ये वो अपने रिस्क पे करता है एंड डिस्चार्जेस ऑल अदर पार्टीज प्रायर टू हिमसेल्फ अनलेस ही ऑब्टेन्स देयर कंसेंट. यानी जब तक पहले वाली पार्टीज अपनी कंसेंट नहीं देंगी तो वो इस केस में अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगी. 9th, discharge by operation of law. Discharge take place on account
of an order of the insolvency court by the lapse of time or merger. Next, discharge by payment of altered instrument. This is covered under section 89, where a negotiable instrument has been materially altered but does not appear to have been so altered. जब पता नहीं चल पाता कि materially alter किया गया है, और उस केस में an instrument discharges the party liable provided he makes payment according to the apparent tenor of the instrument and in the due course. लास्ट इसमें हम लेते हैं discharge by material alteration. This is covered under section 87 and this is an important point. You can find a separate question in the form of short note on this. Where a negotiable instrument is materially altered without the assent of all the parties on the instrument is avoided. Any alteration made by an endorsee discharges his endorser from all liabilities to him in respect of the consideration thereof. तो मटीरियल अल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए. इस केस में एंडोर्सर अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है यदि मटीरियल अल्ट्रेशन किया गया है तो. नेक्स्ट हम कुछ केसेस देख रहे हैं जब मटीरियल अल्ट्रेशन का मीनिंग क्या होगा और केसेस जो कि मटीरियल अल्ट्रेशन में काउंट होते हैं. As I told you, material alteration is specified under section 87. An alteration is material which alters the operation of the instrument and the liabilities of the parties thereto. It makes the instrument void. Next, we are looking at certain instances which results in material alteration. These are alteration of date, name, time, place of payment, amount, rate of interest, alteration by addition of a new party, tearing an instrument in a material party. Next, we are looking at alteration authorized by the act. इसमें हम कुछ केसेस लेते हैं जहाँ पे अल्ट्रेशंस होना मटेरियल अल्ट्रेशन काउंट नहीं होता एंड इससे इंस्ट्रूमेंट वॉइड नहीं होता. जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, फिलिंग ब्लैंक्स इन इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20. ऑलरेडी हम इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ ब्लैंक एंडोर्समेंट इनटू एंडोर्समेंट इन फुल सेक्शन 49. मेकिंग एक्सेप्टेंस कंडीशनल सेक्शन 86. क्रॉसिंग ऑफ एन अनक्रॉस्ड चेक, कन्वर्जन ऑफ जर्नल क्रॉसिंग टू स्पेशल क्रॉसिंग एंड using the words like not negotiable to a crossed check, section 125. So these are the cases where material alteration is allowed by the act. Next and last हम देख रहे हैं, जैसा कि हमने बिगिनिंग में देखा कि डिस्चार्ज जो लाइबिलिटी का दो तरीके से पॉसिबल है. एक तो डिस्चार्ज ऑफ पार्टी और दूसरा है डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट. दिस इज द सेकेंड पार्ट, दैट इज द डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट. When there is termination of liability of the parties, it is called discharge from liability. When the valid negotiable instrument is created, the parties are liable to pay amount due on the instrument. As long as instrument is there, there are certain rights of actions available. When these rights come to an end, the instrument is discharged and is not negotiable. So this is the meaning of the term discharge of instrument. With this we come to an end to our main topic, that is discharge of parties from liabilities. Thank you.